So hello and welcome friends. Today in this video we will learn how to use fragment in the activity. Okay, so let's start. First, I enable the data binding on the Gradle file. Okay, you enable the data binding in build features, and then uh, you see here sync now option. When you click on this sync now, then Gradle will build. Okay, so first. Uh, I've create this main activity file. Okay, so I'll go to this code. Okay, तो सबसे पहले आपको लेआउट टैग ऐड करना इज मस्ट कंपलसरी क्योंकि अगर डेटा आपने डेटा बाइंडिंग यूज कर रहे हो और आप लेआउट टैग ऐड नहीं करोगे तो आप डेटा बाइंडिंग यूज नहीं कर पाओगे. Okay, so here I am using the constraint layout. Okay, I am adding two buttons. Sorry, I'm add two buttons. First one is the login button, and the second one is register button. When someone click on the login button, then login fragment will come, and then if agar user click on the register button, then register fragment will come. Okay, and in the last, I have add a frame layout where my fragment will visible. Okay, so this is the code. And after this, I create a new fragment. So fragment किस तरीके से create करेंगे? So first, right click on your package, then go to new and then fragment and click on fragment blank. Okay. Uh, Here, change your fragment name. In my case, I gave login fragment. And then when you click on finish, the fragment file will add here and the fragment layout file will add here automatically. Okay, so first I am opening the fragment login XML file. Okay, so here first thing, this is must add a layout uh, and I'm using by default you see here a frame layout, but I am very familiar with the constraint layout, so I'm using the constraint layout. Okay. First, I'm adding a text view of this activity, so हम easily identify कर सकें कि ये कौन सा fragment है. So this is login fragment and add to edit text. First is for username and second one is for password. Okay. And last, I'm add a button. When someone click on this login button, then the process will continue. Okay. So this is the code. Very simple code. Okay. And same as that, I've create a second fragment. This is register fragment. Same process you will follow. Click on uh, sorry, right click on your package, new fragment, and blank fragment, and give the fragment name. In my case, I have give the register fragment. Okay, so fragment की register fragment की layout file में चलते हैं. Okay, so here in this case, I've copied all of my code from login fragment and make some changes. Okay, so मैंने ये कोड केवल सिर्फ आपको समझाने के लिए ही कॉपी किया है. आप एक अलग ही यूनिक कोड आप कैसे भी इसको डिजाइन कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज टेक्स्ट लेआउट जो कि हमारी फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करेगा कि मतलब हमें बताएगा कि ये रजिस्टर फ्रेगमेंट है. ओके, एंड हियर आई एम ऐड अ न्यू टेक्स्ट व्यू फॉर ईमेल. यूजर कैन एंटर email also. And the last one is register. In the login fragment, this button's name is login, and in this fragment, this is register fragment. So obviously,
this button name is register. Okay, so this is all the layout part. Okay, so now I am going to my main activity, the main coding part. Okay, so I am declaring the binding and connect to this my Kotlin file. Connect my layout into Kotlin file. Okay, so first I am calling my button and login button and set on click listener. Okay, when user click on login button, then support fragment manager begin transaction and replace my frame layout. Okay, so where is my frame layout? Frame layout is this जो हमने सेट किया था मेन एक्टिविटी में. इस फ्रेम लेआउट के अंदर ही हमारा फ्रैगमेंट शो होगा. तो हमारी मेन एक्टिविटी में हमने क्या कर रहे हैं कि इस फ्रेम लेआउट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन फ्रैगमेंट को शो करा रहे हैं एंड देन डॉट कमिट एंड सेम टू सेम रजिस्टर बटन पे हमने क्लिक लिसनर किया. हमने क्या किया इधर पे भी, हमने वही फ्रेम लेआउट में हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर फ्रैगमेंट को स्टोर करा, सॉरी मतलब रजिस्टर फ्रैगमेंट को हम दिखा रहे हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर. ओके, अब हम जाते हैं अपने लॉगिन फ्रैगमेंट के कोडिंग पार्ट पर. तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे एक कोड मिलेगा जो कि मैंने हटा दिया, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं थी. फर्स्ट आई हैव डिक्लेयर्ड द बाइंडिंग. ओके, एंड द ऑन क्रिएट मेथड अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है. जैसे कि मैं अगर इसको कमेंट भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, तो ऑन क्रिएटेड व्यू में हम क्या करते हैं, अपने व्यू को क्रिएट करते हैं. क्रिएट मतलब हम अपनी जो लेआउट फाइल है फ्रैगमेंट की, उसको हम अपने इस फ्रैगमेंट की जो कॉटलिन फाइल है उससे हम कनेक्ट करते हैं. तो देखो हमने यहाँ पे भी बाइंडिंग यूज किया है, इन्फ्लेट कर रहे हैं. ओके, और यहाँ पे हमने बाइंडिंग डॉट रूट को रिटर्न कर दिया है. ओके, अब व्हेन माय व्यू इज क्रिएटेड, है ना, तब क्या होगा, तब जो हमारी एक्टिविटी के अंदर जो प्रोसेस हम करते हैं, हम जैसे कि जो हमारा मेन पार्ट है, जब हम फिर अपना जो फंक्शनैलिटी को लिखना शुरू करते हैं तो वो सारी चीजें हमारी ऑन व्यू क्रिएटेड में आएगी. ऑन व्यू क्रिएटेड ये आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ नहीं मिलेगा मेथड, आपको यहाँ पे इसको लिखोगे ऑन व्यू क्रिएटेड, आपको आईडी ऑटोमेटिकली सजेशन दे देगा आपका एंड्रॉइड स्टूडियो एंड देन यू इजीली write this method. Okay, so I am setting click listener on login button. Login button means this login button. Okay, so when someone click on this login button, then a toast message will appear, and in this toast message have login successfully. Login successfully मैसेज हमें दिखाएगा. यहाँ पे मैं केवल समझाने के लिए यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज डाला हूँ. आप लोग कुछ भी फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं, पूरी लॉगिन की फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में. ऐसे ही सेम टू सेम एज इट इज कोड है हमारे रजिस्टर फ्रैगमेंट का भी. वही हमने किया है, अपना बाइंडिंग को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे उसको कनेक्ट किया एंड देन हमारा जो रजिस्टर बटन है उसके ऊपर हमने एक टोस्ट मैसेज लगा दिया. ओके, तो इस तरीके से आप अपने फ्रैगमेंट को एक्टिविटी के अंदर शो करा सकते हैं. ओके, तो हम लोग एक लास्ट टाइम इसको रन करके देख लेते हैं अपने ऐप को. ओके, so my app opened successfully and initially this part is blank. my जो frame layout है वो एकदम blank है. when I click on this login button, so my login fragment will appear, and when I create on register button, then my register fragment will appear.
By default, I'm rerun this app. ओके सी बाय डिफॉल्ट यहाँ कोई फ्रैगमेंट नहीं आ रहा। अगर मुझे बाय डिफॉल्ट कोई फ्रैगमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेन एक्टिविटी के अंदर डायरेक्ट इस कोड को कॉल कर दूंगा, सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, वेट फॉर अ सेकेंड, ओके, एंड देन build my app, run my app. Okay, now you see by default login fragment will appear, and then sorry, when create login button, then nothing happened. When I click on register button, then register fragment will appear. Okay, so this is the basic example of uh, fragment and activity. So that's all for today. If you have any doubt, please write it on comment section. Thank you for watching.